प्लॉट दोनों सेम है? ये एग्जिबिट 5 एग्जिबिट 5 क्या है? एग्जिबिट 5 दोनों का जो प्लॉट नंबर्स है ये एक है। कैसे आप बोल रहे दोनों का प्लॉट नंबर एक? देखा जाए 1013 1013 1705 1705 या 1093 ये जो है तो इनका कौन सा है प्लॉट है? इनका प्लॉट जो है 1017 का 13 1705 में इनका क्लेम है और ये जो है सो 85 में जो है सो क्लियर लिखा हुआ है और इसीलिए जब इनको और ये दूसरा जो है 1940-41 का है, जब इनको कहा गया कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में कि ये जो है सो आपके नाम जो हुआ कैसे क्या हुआ उसका कोई डॉक्यूमेंट आप उसको दिखाइए, नो डॉक्यूमेंट वाज प्रोड्यूस बाय देम। तो कोई भी टाइटल डिराइव करेगा तो हम भी खतियान से जब गंगोत्री ही हमारी सूख जाएगी तो गंगा भी सूखी रहेगी। वही सेम प्लॉट नंबर है, इसका चौहदी क्यों नहीं? चौहदी इज द सेम। और ये 5 में भी है सो क्लियर जो है ये ऑर्डर शीट में है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एग्जिबिट 5 या यस एग्जिबिट 5 का डिस्कशन इसमें कहाँ है? डिस्कशन ट्रायल कोर्ट में एपीलेट कोर्ट में डिस्कशन होगा ना एग्जिबिट 5 का। Error 34 the appellate court. इधर से और ये एग्जिबिट 5 के एग्जिबिट 5 जो है जो ऑर्डर है रेवेन्यू रिकॉर्ड का नहीं presents the report of the CI. He has reported that the land of plot number 1013 appertaining to खाता number 227 of village Sapur was by the Anchal Amin in his presence. It appears was measured by them. was measured, yeah. Measured. Measured by Anchal Amin in his presence. It appears from his report that the plot in question is GM. The total area of the plot is 6.78 acres, out of which some settlement was made by the Khasmal officer long before the date of vesting of the village was Khasmal 1. It appears from his report that out of several settlements made by the Khasmal officer, one was made with the Sawal Ram Seth Height case number 8/2206 of 3627 for 0.15 acres bounded as follows. For the above mentioned settlement and area, a new Khata 337 was erected in Khas Mahal, Khatian in the year 1942. The above named settle transferred the land to Shivdham, Nimdhari Saw, and the name of the transferee was mutated by Khasmal mutation case number 7 of 4546, and he has been paying rent since then and in possession of presently his house stands over this land. Another settlement was made in the year 2728 by case number 81037 with Sri Zabuni Saw, son of Viseswar Saw, as new Khata is Khasmal Mutis Khatian, was erected for the lands as described below. Another settlement was made in the year 1927-28 by case number 81037 with Sri Zabuni Saw, son of Viseswar Saw,
as new khata 275 in खास मंथ अभियान was created for the lands as plot number दिया हुआ है 110-13 उसमें और ये इसमें मैंने चौहदी भी दिया हुआ है. Later in the year 2930 a separate khata number 304 was created by notation case number 48 of Khasmal out of khata 275 in the name of the Ram Lakhan Saw, son of Visweswar Saw, जो अपने भाई थे. For the lands detailed below 304 same plot number 1013 1765 1765 इतना जो 16 जो है वही 32 से मैंने घटा के किया गया. In the year 4445 khata number 275 was mutated in the name of Shivji to Bhaktichand Pathak Pujari. Height case number 384 khata number 304 was mutated in the name एक of सेकेंड, ये 1929-30 में 304 क्रिएट हो गया. उसके बाद 1944-45 में एक ये जो खाता नंबर 275 बचा, ठीक है. अब जो खाता नंबर 275 होगा तो उसमें 304 तो नहीं इंक्लूडेड होगा ना. क्योंकि हम जमीन 29-30 के पहले ही शिव जी को दे दिए हैं, लेकिन सेटलमेंट हुआ बाद में. ये कहाँ से आ रहा है बता ना. नहीं, इसको पढ़िए, इसको कंप्लीट पढ़िए. In the year 1944-45 in the year 1944-45 khata number 275 was initiated mutated I'm sorry, in the name of Shivji to Bhaktichand Pathak Pujari. Height case number 384 khata number 304 was mutated in the name of Bhaktichand Pathak. Height Asmal of officers order in mutation case number 59 of 4041. In the year 1943 Suraj Mani Devi, wife of Bhaktichand Pathak, sold the land of khata number 304 to Sri Ramdev Mishra. Height sale deed number 7126 dated 12/7 and the ND name was mutated. Height case number 447475. It appears from the report of CI that the above mentioned different rayats are in possession of their respective land. The CI further reported that out of 26.26 acres of land is plot number 1013 for which demand is running in the name of Ramdev Mishra. 0.15 acre is alleged to be settled. With this Sri Devrat Ram, the appellant number 1 here, of village Sapur and demand opened in volume number 5, page number 67 of Jamabandi, register of village Sapur, from the report of the CI and the list and the furnished by the Anchal Amin, which has been proposed on the basis of physical possession, are plot number 1013 that Sri Devdat Ram is not in possession of come and of land in plot number 1013, and the portion which Sri Devdat Ram claims on the basis of settlement case number itna of 64-65 in possession of the Dev Mishra. The CI has recommended cancellation of the demand running in the name of Sri Devdat Ram as he holds the demand irregular and duplicate. In this connection, it is pointed out that the original case record 8-14 of 64-65 to which favor has been made. I am unable to read. In the demand register, its opening demand is the of Sri Devdat Ram, but not appear to be available in the office. In this case, register maintained for the year. इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं. नहीं तो ये जो है कि 304 जो हुआ तो उसी से कट के हुआ, और हमारा जो ये जो डीड जो हम बनाए हैं तो ये उसमें 304 तो 275 का ही पार्ट था. कब बनाए थे जी? वो डीड तो बना बाद में, लेकिन मैं तो शुरू से हम शिव को दिए हुए ऐसा ओरली पहले वही था और वही लिखा हुआ है. ऐसे नहीं चलेगा ना.
आपका अर्पणनामा का डेट क्या है? अर्पणनामा का डेट बताइए। और एग्जिबिट 10 तो कोई डिस्प्यूट ही कभी नहीं किए हैं। इट वाज नेवर डिस्प्यूटेड, इट वाज नॉट इन डिस्प्यूट। आप भी उसी पे रिलाई कर रहे थे, वो भी उसी पे रिलाई कर रहे थे। लेकिन 304 तो उसी का लेकिन उसका डॉक्यूमेंट इन लोगों ने क्यों नहीं लाया? ये जब ऐसा सूट फाइल की है तो हमारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जितना है ना, उसके बियॉन्ड तो हम एक शब्द सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बस सीधा आप एग्जिबिट 10 जो फैक्ट है और जो रिकॉर्ड्स है, हम तो उसी पर कुछ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड और फैक्ट पे नहीं, हम लोग लॉ पे चलते हैं। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बना है, कुछ तो फैक्ट दिखना ही होगा। हाँ, तो वही इसीलिए तो इतना देर सुन रहे हैं, तो क्यों सुनते? बताइए। वही है, तो मेरा यही सबमिशन है। माय सबमिशन में रिकॉर्डेड 275 का ही पार्ट 304। अब कहाँ कोई से उसमें नाम ही नहीं बताइएगा? दिया, कोई मार्क नहीं दिया। और इन लोगों ने सेटलमेंट अगर हुआ है, म्यूटेशन तो हो नहीं सकता है खास मर्द का, जो कि कमिश्नर ने वैसे उस पर फाइंडिंग किया। और उसके बाद ऐसे इन लोगों ने ऐसे ये 144 करना शुरू किया। जनता को पता ही नहीं है कि सेल्डिट हो गया, चुपचाप इंटरनल चल रहा है। देखो, जो भी हमारे देश में जो हो रहा है कि मंदिरों का जमीन को किस तरह से जालसाजी करके किया जाता है, उसमें एक PIL हुआ हमारे रांची में, और उसमें एक ऑर्डर दिया, और उसमें जो है सो यही हुआ कि CBI को जांच का आदेश दिया गया कि पॉलिटिकल फोरम है ये, नहीं, पॉलिटिकल रिकॉर्ड से बाहर हम कोई बात नहीं सुनते। आप हमको कुछ हम मत जजमेंट की सुनाइए। बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो जजमेंट की बात, आप जजमेंट जानिए। जजमेंट में है, इसलिए इसका क्या रेलेवेंस है यहाँ पर कि बहुत सारा एनक्रोचमेंट हो रहा है और मंदिर का जमीन ऐसा हो रहा है? इसलिए मैंने ऐसा हो रहा है तो होता होगा, इसमें क्या है ऐसा? मंदिर का जमीन कुछ हो रहा होगा तो मंदिर वाले आएंगे ना बोलने के लिए कि भाई मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दीजिए इस प्रॉपर्टी पर। कहाँ है मंदिर वाले? उन्होंने सूट क्यों नहीं फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ देयर टाइटल? उनको होश है? मंदिर का पुजारी अगर है तो उनका जो प्रतिचल, उसका जो है, तो मंदिर का पुजारी जो है उनको तो सेल करने का तो राइट नहीं है। इसका रेमेडी क्या होगा वो आपसे बेहतर हम थोड़ी जानेंगे। लॉर्ड से बेहतर हम लोग क्या, हम लोग तो सीखते हैं माय लॉर्ड से। इसमें AI 2021 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पुजारी जो है उनको पूजा पाठ करने का अधिकार है, जमीन में उनका मलकियत राइट नहीं हो जाता। इसके लिए जजमेंट की जरूरत नहीं, इसके लिए लॉ में कोई डाउट ही नहीं है। मध्य प्रदेश बस स्टेट वर्सेस पुजारी उत्थान एवं कल्याण है। दिस इज माय सबमिशन। कहीं उनका चौहद्दी नहीं है, कहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है। क्या कौन सा जमीन चौहद्दी होना चाहिए ना, कोई भी जमीन का ना प्लेट में है ना कहीं कुछ है। अच्छा, बंदोबस्ती भी जो हुआ है वो मान लीजिए अगर खासमल ऑफिसर्स है तो वहाँ का भी कोई रिपोर्ट उन लोगों ने जमा नहीं किया। कैसे 304 से टाइटल डिराइव कर रहे हैं? हमने नोटिस भी दिया था कोर्ट में कि आप अपना बंदोबस्ती ये सब का सब डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। दे फेल टू प्रोड्यूस एडवर्स इंफ्लुएंस में भी जाऊँ। देखिए, आपका अर्पणनामा का डेट है 6/10/1939 और ये जो आपने एग्जिबिट 5 प्लेस किया है इसमें 1929-30 में ही 304 अलग हो गया। तब आप कैसे बोल रहे हैं कि अर्पणनामा के समय 304 अलग नहीं हुआ? खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उससे क्या मतलब? चौहद्दी इनका प्रिंट में नहीं है कहीं। सब चीज लिखा है, चौहद्दी के साथ है, गलत चौहद्दी है जो ऑन रिकॉर्ड है। कोई बात नहीं। का परमिशन लो। हाँ बताइए। मेरा नाम 3 नंबर फ्लैश कर।
तो हमरा इतना ही का पैरा 30 आपके इतना बड़ा टीम में यहीं से बीच में से उठ के जाते हैं, ये तो सही बात नहीं लगता हमको। हमरा गलती है, हम खुद मानते हैं। अपने आप को फ्री करके रखा करिए। सेकंड अपील फर्स्ट अपील बहस करना है तो बाकी कोर्ट का मोह को छोड़ना पड़ेगा। 8 केस छोड़ दिया है सुबह से, लेकिन अभी वहाँ फ्लैश कर रहा है। आप जजमेंट ले लीजिए, मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। साथी साहब हमसे भी सीनियर है तो जो नाम फ्लैश कर रहा है इसलिए नाम फ्लैश नहीं, आप जाइए। और तो कुछ नहीं ना बोलना आपको। हमको पैरा 30 को दिस इज द क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ द माय लर्नड फ्रेंड ट्राई टू divert the issue. The issue is very simple. Whether Exhibit 10 having two parts of the land. First part relates to the Shiv temple and second part relates to self-acquired property of Pratik Chand Bhatt, who already sold it in the year 1962. That was never challenged by him. Then the purchaser sold it in 1990 by two sale deeds, that is being challenged. Now what my learned friend has read, that is a report of circle inspector. Now whether the revenue authorities have any right to decide right at an interest of any party, if I put a question to myself. Then secondly, the para 34 of the appellate court judgment in extenso dealt with it and ultimately found that he failed to produce in support of his counter claim. Therefore, his claim was rejected. But so far we are concerned, it is a very distinct and specific case, that it is an every description of the property is given in the schedule appended to the claim. There is no ambiguity. Therefore, we are concerned with only that part 26. Nothing more. All right. The learned counsel for the appellant has submitted that Exhibit 10 has to be seen with Exhibit 5, which is the CC of the order sheet of miscellaneous case number 107 of 1976-77. Which is based on the report of circle officer. The report of the circle inspector. He submits that the said order sheet reveals that plot number 3, khata number 304 was carved out from khata number 2 to 7. And Arpannama was for khata number 2 to 7. And therefore, the Arpannama Exhibit D. Samarpannama. Exhibit D was for khata number 2 to 7. And therefore, khata number 304 was also included in the Samarpannama. The learned counsel has also submitted that the boundary of the property has also not been mentioned in exhibit. Boundary और चौहद्दी एक बात है अलग. बाउंड्री तो हो जाता है कि चौहद्दी में होता है कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है. और बाउंड्री में क्या? जो दिया गया उसको बाउंड्री कहते हैं. बाउंड्री में क्या बोलते हैं? चौहद्दी को बाउंडेड एंड बटेड. The boundary of the property has also not been mentioned in exhibit 10. बाउंडेड एंड बटेड. आप ही लिखा दीजिए, हम साइन कर देंगे. आई एम सॉरी.
ठीक है, ये वाला जरा दो। G/8.
After hearing the learned counsel for the parties, this court finds that the specific case of the plaintiff was that the suit land belonged to Vakil Chandra Pathak and was the Khasmahal property total measuring 6.78 acres, and it was settled in the year 1940, and it was also mutated by as Khasmahal by order number 59 of 1940-41, and Vakil Chand continued to pay rent. He died in 1971, leaving behind his widow, who transferred the suit property through registered deed dated 12/7/1973 to one Brahmadev Mishra, who became the sole owner of the property and continued to pay rent. He also died, leaving behind his widow and 4 sons, and subsequently one of the sons, namely Kamaleshwar Mishra, sold his share to Shiv Pyari Devi. Further case of the plaintiffs is that legal heirs and successors of Brahmadev Mishra and also Shiv Pyari Devi transferred the suit land to the plaintiff through 2 registered sale deeds on 18/12/1990, and the plaintiffs duly acquired possession of the same, constructed boundary wall and a small house. The name of the plaintiffs was also mutated and they were paying rent, and there has also been a demarcation of the property, being in demarcation case number 1995-96. It was further case of the plaintiff that defendants started creating trouble, and consequently a proceeding under section 144 of CRPC was initiated at the instance of defendant number 2, wherein they took a plea that the property belongs to Shiv Mandir. It was the case of the plaintiff that the property of Shiv Mandir was situated to the north of the suit land. During verification of Anchal record, the plaintiff found that demand was opened in the name of defendant number 1, which was subsequently cancelled on protest. The plaintiffs had requested the defendants not to put construction over the suit property, but the defendants continued to create trouble. It was this further case that the cause of action arose when the defendants committed disturbance in enjoyment of the suit property by the plaintiffs, and plaintiffs tried to make amicable settlement, and last such date was 31/3/1997. The defendant number 1 and 2 the defendants contested the suit, and the defendant number 1 and 2 filed separate written statement.
And defendant number 4 also filed a separate written statement, while defendant number 3 adopted the written statement of defendant number 1 and 2. The contention of the defendant was the suit was barred by limitation and was also barred under the provisions of section 34 of the Specific Relief Act. It was also asserted that the suit was barred on account of non-joinder of necessary parties, inasmuch as Khasmail Officer State of Bihar and Shiv Mandir and Lord Shiva were not made party to the proceedings. So far as the merits of the case is concerned, it was asserted that plot number 1013/1705/1765, area 16 decimal, and plot number 1706/1766, area 10 decimal, besides other portion of land of defendant number 1, was never owned and possessed by Fakir Chand Pathak, and the said property was owned and possessed by Shivji, over which the possession of Fakir Chandra Pathak was that of Pujari and agent of Shivji. And the property was never settled by Khasmail officer to Fakir Chandra Pathak. It was the further case that a petition dated 7/1/99 was filed before the court under Order 6 Rule 5 of CPC, directing the plaintiffs to disclose a settlement case number, manner of settlement, date of authority of settlement with Fakir Chand. But the plaintiff, instead of disclosing required particulars, filed a rejoinder, but ultimately nothing was brought on record. But the required particulars were not brought on record. It was further case that that mutation case number 59 of 4041 was a result of fraud played by Fakir Chand and that mutation is neither a document of title nor of possession. It was their case that the Fakir Chand paid rent, but not as a tenant, but on behalf of the deity Shivji. And since he was the custodian of the records of the property, he might have tempered and forged the documents. It was the further case that even in the year 1938, the government had reduced the rent in favor of the deity Shivji, and the property was settled with Shivji much before 1940. And it was asserted that
it was not clear as to how the property could be settled with Fakir Chand in the year 1940. It was a case of the defendants that Fakir Chand was in permissive possession as Pujari on behalf of Shivji. The case of the defendants was that since Fakir Chand did not have any title over the property and he was only in permissive possession, his wife had no right to execute any sale deed, and consequently the sale deed dated 12/7/73 was a void document and without consecration. And therefore, Brahmadev Mishra did not acquire any right, title, interest and possession over the property. And therefore, the subsequent sale deeds were also void. It was the case that the plaintiffs never came in possession and they did not acquire any title by way of purchase. It was further case of the defendants that the plaintiff had illegally encroached upon 26 decimal of land of Shivji by erecting boundary in the north and one incomplete room. On 17/3/1996, a proceeding was initiated under Section 144 CRPC, and the matter went up to the Court of Commissioner in Revenue Appeal number 30 of 1996. The defendants asserted that they had no idea about the mutation proceedings in favor of the plaintiffs, as proper procedural and on-the-spot inquiry was not done, and consequently the rent receipts are bogus, forged and fabricated, and any order of demarcation is a table work. The map shown by Anchal Amin is also collusive, and the Anchal office gave various reports in favor of the plaintiffs in collusion with the plaintiff. It was asserted that the plaintiff's claim of opening khata in survey was rejected under Section 83 of CNT Act, and khata was still existing in the name of Shivji and defendant number 1. It was asserted that, as a matter of fact, the suit land was part and parcel of 53 decimal of land of Shivji. The plaintiffs cunningly, with ill motive, have shown wrong boundary to grab the land. And consequently, the defendant number 1 and 2
had also prayed dismissal of the suit and filed a counterclaim under Order 8 Rule 6 capital A of CPC. The case of the defendants as per counterclaim was that the defendant number 1 and defendant number 2 are the case in the counterclaim was that the land of plot number 1013 under original khata number 227 was full of jungle jhadi. The ancestor of defendant number 2, namely Vishwasar Sao, built a Shiv temple in the village, and the mandir was public temple. In order to maintain the Shiv mandir, Vishwasar Sao appointed Fakir Chandra Pathak as Pujari. And so long as Vishwasar Sao was alive, he remained as Shivayat. He died leaving behind it to his two sons, Raghuni Sao and Ram Lakshman Sao, who started maintaining the Shiv mandir. It was further case that the elder brother, they reclaimed 20 decimals of land in plot number 1013 of khata number 227, which was settled by the Khasmahal authorities. And in the year 1922, Raghuni Sao and his brother again made Korkar of 33 decimal of land on the said plot 1013 and remained in possession for a long time. By virtue of occupancy of their aforesaid property of 20 decimal and 33 decimal, they acquired occupancy tenancy right over 33 decimal of land, and Raghunai Sao, taking consent of his brother Ramlakhan Sao, gave 53 decimal of land to Shivji for maintenance of the temple. It was the further case that Raghunath Sao got name entered in Malki Khatian of village Sapur in the name of Shivji in 1927-28, with specific boundary maintained by Khasmahal, who redesignated the plot number 1013/1705 for area 33 decimal and plot number 1013/1705 for area 20 decimal under khata number 275 with specific boundary. In the year 1938, rent receipt was also issued.
the entry in the Maliki Khatian mentioned Fakir Chandra Pathak as Pujari. Later on, the two brothers made Samarpan Nama in the year 1934-35 and handed over the same to Pujari Fakir Chandra Pathak. It has been mentioned that till 1938, the deed of Samarpan Nama comprising plot number 1013/1705 and 1013/1706 was not registered. And therefore, the younger brother got it registered in favor of Shivji on 6/10/1939 and confirmed the earlier Samarpan Nama and donated some other land of his share. And Pujari Fakir Chandra Pathak accepted the same on behalf of the DT. Thus the case of the defendant was that the property was given in the name of that DT much earlier, although the deed was registered in favor of Shivji only on 6/10/1939. The further case of the defendant was that plot number 1013/1705 and 1013/1706 were redesignated as plot number 1013/1705/1765 and 1013/1706/1766, but the area remained the same, and the khata was renumbered as khata number 304. It was asserted that after death of Fakir Chand, it was asserted that by the defendant number 1 that there was some vacant portion of khata number 227, plot number 1013, touching road eastern side of the land of Shivji, out of which 15 disposal of land was settled with defendant number 1 by settlement case number Roman 8/14 of 1964-65. Boundary north and south Parthi Kadi, west Parthi, in possession of Shiv Mandir. And east was Sahapur, Chainpur. It was a case of the defendant number 1 that he was the son of political sufferer and he was in possession of the property
and the plaintiff started creating trouble from 1st of April 1998. The vendors of the plaintiff had fought for cancellation of demand of the defendant number 1, but they had lost. And the order of the Commissioner in Revenue Appeal number 39 of 1996, dated 28/2/1998, attained finality. The defendant also asserted that during the pendency of the case, the circle officer Jainpur under court's order had measured the land of defendant number 1 and had found the land separate. The defendant also admitted that there were proceedings under section 144 CRPC between the parties. The specific case of the defendant was that mutation case number 59 of 4041 was a result of fraud played by Fakir Chandra Pathak. And Fakir Chandra Pathak had claimed that he had purchased the property of Khata number 304 through sale deed executed by Ramlakhan Sao on 6/10/1939 for rupees 100 and got his name mutated in Maliki Khatian with plot redesignated as 1013/1705/1765 and 1013/1706/1766 without specific boundary. Fakir Chand had also tried to get mutation for the whole 53 decimal of land donated to Shivji, but could not succeed. It also asserted that an order dated 1/3/45 was drawn to correct the illegal entries in mutation case number 59 of 4041, but no corresponding correction was made in the Maliki Khatian. The counterclaim as filed by the defendants had
prayed for the following relief. Para 14 में मिले. Admittedly, no written statement was filed to the counterclaim. वो आपका किताब का है, citation आपका. 2015 1 this year. ये वाला दीजिए तो written statement निकाल के दीजिए. Written statement निकाल के दीजिए. That means इसमें होगा क्या उसमें. Written statement इसका WS. The schedule A, B and C properties as mentioned in the written statement from counterclaim are as under. The learned trial court framed the following issues for consideration. Para 16. So far as issue number 3 is concerned, which is related to the substantial question of law involved in this case, was decided as under, along with issue number 1, Roman 2, 5 and 9, para 29. The learned trial court considered the oral and documentary evidences on record and the and decided all the issues. So far as the counterclaim of defendant number 1 is concerned, which was issue number Roman 2, the same was rejected by para number 19. The learned trial court recorded that the counterclaim of the defendant that it was doubtful as to which portion of the land was given to defendant number 1 and to what extent and what was the exact date of delivery of possession.
The learned court held that there was no documentary proof or valid settlement in favor of defendant number 1. And Shri Devrat Ram had no valid title, right title, interest and possession over the land area 15 district, plot number 1013, khata number 227. And the issue was decided against defendant number 1 and in favor of the plaintiffs. So far as the issue number Roman 6 is concerned, the same was decided by paragraph number 23. The learned court recorded that Exhibit 10, which is the Maliki Khatian, was also produced by the defendants as Exhibit C. And from perusal of Exhibit 10, it appeared that the mutation was done by the Khasmail officer in the name of only Fakir Chandra Pandit. With respect to khata number 304, giving the plot number as 1013/1705/1765 and 1013/1706/1766. In place of khata number 275. The learned court, while referring to Exhibit C, observed that similar fact was mentioned, but in mutation case number 334/44-45, land of plot number 1013/1705, area 17 decimal, and 1013/1706, area 10 decimal only, was mutated in the name of Shivji through Fakir Chandra Pathak, relating to land of khata number 275. The learned court held that there are two separate mutations, and Fakir Chand got 17 decimal of plot number 1013/1705, area 17 decimal, and plot number 1013/1706, area 10 decimal, total 27 decimal, as Pujari, and land of plot number 1013/1705/1765, area 16 decimal, and plot number 1013/1706/1766, area 10 decimal, total 26 decimal, in his own capacity and not as Pujari of Shivji. The learned court ultimately held that the suit land was obtained, suit land which was relating to plot number, to khata number 304, was obtained by Fakir Chand himself through settlement by Khasmail officer and not as Pujari or Shivai.
and therefore it was his self-acquired property. While deciding issue number 7 and 8, the learned court recorded that in mutation the learned court, after considering the materials, has recorded that has rejected the case of the defendant that the entries in Malki Khatian was not corrected by observing that the Khatian was more than 60 years old. And other documents did not prove the contention of the defendants. The learned court ultimately recorded that from the documentary evidence it was clear that the suit land is separate land acquired by Fakir Chandra Pathak and the land given by Ram Lakhan Sao or Raghumani Sao by Samarpan to Pujari Fakir Chand is separate piece of land, and decided the issues in favor of the plaintiff. By deciding issue number 11, the other issues were issue number 9. While deciding issue number 11, the learned court held that the deed of settlement executed by Ram Lakhan Sao in favor of Fakir Chandra Pathak dated 6/10/1939, in which plot number 1013/1705/1765 and 1013/1706/1766 is mentioned, Maliki Khatian within bracket exhibit 10 shows that the said plot number was given in mutation case number 59 of 1940-41.
then how the same could be mentioned in Exhibit D? The learned court also recorded that the defendants had not brought any case to declare the sale deed, Exhibit 2 and 2 by A, as null and void, and the defendant got knowledge about the deed so the claim of the defendant was time barred, and the settlement deed could not restrict right not to transfer the land given in the schedule of the plaintiff. The learned court further decided issue number 4 and observed that the possession of the dispute was undisputed. The possession of the plaintiff was undisputed, and that the plaintiff had also perfected their title by efflux of time and adverse possession. So far as the learned first appellate court is concerned, the points for determination were recorded in paragraph number 13 as follows. The learned first appellate court while deciding the point of determination number 6, observed that the learned trial court had rightly decided the issue number 12 against the defendant number 1 by holding that there was no documentary proof of valid settlement in favor of defendant number 1, and therefore Ram had got no valid right, title and possession over the land bearing plot number 1013 of Khata number 227, area 15 decimal. And also recorded that the land of defendant number 1, as described in Schedule C of his counterclaim, was not encroached by the plaintiff. The other issues, by paragraph 29 of the judgment, the other issues, that is question number 1, 2, 3, 4, 5 and 7, were decided together by paragraph 30 onwards. The
learned First Appellate Court. सर फर्स्ट एप्लीट कोर्ट में यस मैडम फर्स्ट एप्लीट कोर्ट में वो फाइंडिंग जो सर पढ़ रहे थे वो कहाँ है has considered exhibit 10 has considered the documents including exhibit 10 and in particular and in paragraph 34 in paragraph 32 को quote करेंगे ठीक है sorry Page 33. page 33 yes para 32 को quote करेंगे और बाकी पैराग्राफ बहुत लंबे हैं उसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं वहाँ से The learned First Appellate Court ultimately recorded in paragraph 37 and held that the suit land of Khata number 304, plot number 1013/1704/1765, area 16 display, and plot number 1013/1706/1766, area 10 display, total 26 display was exclusively settled to Fakir Chandra Pathak, and the same was legally mutated in his favor in mutation case number 59 of 4041 by Khas Land Authority. It was further held that 17 decimal of land of plot number 1013/1705 and 10 decimal of land of plot number 1013 and 1706 of Khata number 275 of village Sahapur was settled with Dhaguni Sao, son of Vishwesar Sao, by settlement case number Roman 7/137 of 1927-28 separately, and only the said 27 decimal of land was donated to the temple of Lord Shiva by the descendants of Vishwesar Sao, which was mutated in the name of Sri Shivji, represented through Fakir Chandra Pathak Pujari. It was also held that the land mentioned in Schedule A of the written statement cum counterclaim of defendant was exclusive land of Fakir Chandra Pathak, and land of Schedule B of written statement cum counterclaim of the defendant was not encroached by one Mahesh Prashad Jaiswal, and consequently it was held that the sale deeds were rightly executed.
The operative portion of the judgment of the learned first appellate court is quoted as under. So far as the substantial question of law involved in this case is concerned, this court has gone through Exhibit 10, which is the same document, which Exhibit 10, that is Malikana Khatian, which was said to be prepared in the year 1938. The said Exhibit 10 reveals that Khata number 270, that so far as properties involved in Khata number 275 is concerned, the same was recorded in the name of the temple Shivji through Fakir Chandra Pathak, the Pujari, and there is another Khata number 304 which stood recorded in the name of Fakir Chandra Pathak in his individual capacity, which does not show that it was being recorded in the name of temple, nor did it show that it was being recorded in name of Fakir Chandra Pathak in the capacity of Pujari of the Shiv Mandir. It has been pointed out by the learned counsel for the appellant that in Khata number 275, the description of the plot number is 1013/1705 and 1013/1709, and in Khata number 308 also the plot number is 1013/1705 /1765 and 1766/1766. This court is of the view that merely because there is some similarity with respect to plot number, the same has no bearing in the matter. In view of the fact that Khata number 275 and Khata number 304 are separately recorded, and there is nothing on record to show that what was the total area under one or the other plot numbers mentioned in Exhibit 10. This court finds that both the courts have given concurrent finding, holding that the plaintiff was claiming property in Khata number 304 and not in Khata number 275. And upon perusal of Exhibit 10, this court finds that there is a separate entry in the name of Fakir Chandra Pathak
in his individual capacity under Khata number 304, and therefore the separate entry made in the name of Fakir Chandra Pathak under Khata number 304 cannot be intermingled with the separate entry made under Khata number 275 in the name of Temple Shivji, showing Fakir Chandra Pathak as the pujari. This court also finds that at no point of time the sale deed executed by the widow of Fakir Chandra Pathak with respect to the suit property and also the subsequent sale deeds were challenged by the Temple Shivji or by any other person in order to represent the cause of the temple. Admittedly, the plaintiffs are in possession of the suit property. In view of the aforesaid facts and circumstances, this court has no doubt that both the courts have scrutinized the materials on record, including Exhibit 10, to arrive at finding of fact and hold that the plaintiff has right title, interest and possession over the suit property covered by Khata number 304 as mentioned in the schedule to the plate. So far as the argument of the appellant with respect to section 34 of the Specific Relief Act is concerned, this court finds that the suit was not barred by section 34 of Specific Relief Act and the plaintiffs had proper cause of action when the defendants threatened the right title of the plaintiffs, and there has also been multiple litigations in connection with the property, including proceeding under section 144 of CRPC. Accordingly, the substantial question of law is decided against the appellant and in favor of the respondent plaintiffs. So far as the argument of the appellant in connection with counterclaim is concerned, this court finds that no substantial question of law has been framed by this court relating to counterclaim. Otherwise also, the argument of the appellant that in absence of written statement, the counterclaim was, the suit itself was fit to be dismissed. This court is of the view that such an argument is misconceived,
Such argument has been made on the basis of the judgment passed by the Honorable Supreme Court reported in 2015 within bracket 1 bracket close JCR 23 within bracket SC, and special reference has been made to paragraph 12 thereof. This court finds that, as per paragraph 12 of the judgment, it has been held that counterclaim preferred by the defendant is in the nature of a cross suit, and even if the suit is dismissed, the counterclaim shall remain alive for adjudication. And for that purpose, the defendant is required to pay the requisite court fees. It has also been held that the plaintiff is obliged to file a written statement, and in case there is default, the court can pronounce a judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim put forth by the defendant, as it has an independent status. Nowhere it has been held that if no written statement is filed to the counterclaim, then the suit is required to be dismissed. Rather, the counterclaim itself is required to be decided as a separate suit. And even if the suit is dismissed, the counterclaim is required to be adjudicated. This court finds that the learned trial court has adjudicated the counterclaim and recorded finding. The concurrent finding has been recorded by the learned first appellate court also, and no substantial portion of law having been framed in connection with counterclaim, this court is not inclined to pronounce any further on the merits of the counterclaim. Consequently, this appeal is hereby dismissed. इसको ठीक से ना जोड़िए ना फिर से। इसको नहीं खींचना, इसको पे करना भी नहीं। देखिए एग्जिबिट 10 है ना, ले लीजिए। अब वापस next is there will be corrections in the judgment. There will be corrections in the judgment, but this is the result. मोटा मोटी यही है. Order with effect item 4, first appeal file number 5636 of 2025. Yes. Where is it? What is the remaining defect? Remaining defect is with respect to the court fee. Yes. It has been assessed at 2,99,000 Huh. and odd is yet to be paid. Yes. But it has come against the award under reference 3H4 of the NHR. Yes. So The award has been passed by the district judge, principal district judge, in LA case number 1 of 2020. okay. So yes, court fees. You don't have to pay the court fees. Like, according to my understanding, that the court fees ad valorem shall not be payable. Because it comes from a 3H plus 3G and thereafter 3H1 proceeding. Under 3H4, there is a reference. And in a reference, first question shall be whether title can be decided. Now,
the reference had gone and was under section 96 we have prepared this first. So in view of the schedule 2 article 17(3), it is a declaration which has been given by the principal district judge that I am not entitled to the compensation, rather the other party is entitled to compensation. So in view of that declarative nature of the No. Ultimately, you see, you are claiming certain portion of the property. no whole Of the compensation, whole that whole or whatever. right But your claim is for the whole amount. whole amount. So pay the court fees. You have the claim for the entire amount. ये तो The appeal is valued at the entire amount. नहीं, ये अब दिखा देते हैं, नहीं हुआ जो वहां पे था हम दिखा देते हैं, वहां देख लेंगे। You have filed any petition? Yes, What is that petition you have filed? IA number? 745 7459. जी। ये जो हालांकि इनको करना नहीं चाहिए था, ये अवार्ड कैसे पास कर सकते हैं? देयर इज जुरिसडिक्शनल एरर आल्सो, पेज 14 ऑफ द IA काइंडली सी। अवार्ड तो 3G में होता है NH एक्ट में, तो ये अवार्ड पास कर रहे हैं। कैन यू डू दिस? इसको तो आप जब फर्स्ट अपील फाइल करेंगे तो हम फर्स्ट अपील के अनुसार देखेंगे। रीट फाइल कर दीजिए विदाउट जुरिसडिक्शन। थोड़ा वर्क रीट में कितना पैसा लगता है? 250 नहीं 1000 लगेगा जुरिस में अपनी फर्स्ट अपील में भी। और अगर शेड्यूल देखें ब्रॉट दैट शेड्यूल आल्सो और ये NHAI से है? हाँ NH एक्ट का है। NH एक्ट का है? हाँ अच्छा, इसका फर्स्ट तो अपील होता है? जस्ट लाइक ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में होता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में NH एक्ट में लैंड एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टर को पावर होता है अपॉर्चनमेंट का, वो जो है सुनते हैं मैटर। फर्स्ट अपील होता है सिविल जज के यहाँ, वहाँ से सेकेंड अपील आता है। यहाँ पे चूंकि ये किसका अवार्ड है? किस सेक्शन में अवार्ड है? 3G में 3G का अवार्ड है। वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब लिख दिए अवार्ड वर्ड, लेकिन वो होगा नहीं, गलत। पूरा मेसअप हुआ प्रोसीडिंग, हमको लगता है कि नहीं समझा गया है वहाँ पे। जो काइंडली हैव 3G, उससे पहले होता है 3D का डिक्लेरेशन। ये 3G में अवार्ड हुआ है? हाँ, उस अवार्ड का मालूम हुआ क्या कि 3G में अवार्ड मेरे नाम से प्रिपेयर हो गया, डीड मेरे नाम का है, होल अवार्ड वाज प्रिपेयर्ड इन माय नेम। देन 3H में ये जमा हो गया अथॉरिटी के पास में। उसके बाद वेरी सरप्राइजिंगली एक ऑब्जेक्शन पुराना उठा करके रेफरेंस कर दिए। रेफरेंस इटसेल्फ वाज बैड, क्योंकि इसमें तो आर्बिट्रेशन होना था। नहीं, आर्बिट्रेशन होगा जब हम अमाउंट डिस्प्यूट करेंगे। 3H4 देखिए, जब दो पार्टी क्लेम करेगा तो वो डिस्प्यूट नहीं है। नहीं हम स्लोली पढ़ते हैं। I've read this many times। मतलब 5 पढ़ रहे हैं। If the amount determined by the competent authority under subsection 1 or subsection 2 is not acceptable to either of the parties, मतलब award was prepared for me only, there was no party contesting, because the objection got decided in 3C. If we see the scheme, मतलब kindly come back 3C देखिए, 3A then 3C, 3A देखा जाए, power to acquire land etc, where the central government is satisfied। 3C 3A पहले देख लीजिए तो सीक्वेंस में सही रहे। 3A 3A कैपिटल A, lots of got yes, power to acquire land where the central government is satisfied that for a public purpose
any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may by notification in the official gazette declare its intention to acquire the land. Then 3 में कहता है the competent authority shall cause the substance of the notification to be published in 2 local newspapers, one of which will be in a vernacular language. यहाँ पे मतलब लॉर्डशिप देखेंगे कि यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नहीं है, अलग से नोटिफिकेशन होता है एंड दीज अथॉरिटीज आर कॉल्ड काला. ऑल्दो मतलब हमारे स्टेट में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को ही पावर दे दिया काला. देन मतलब सी आता है 3C हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस. सी मतलब पढ़े पढ़िए. 3C कहता है हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस. एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड मे विदिन 21 days from the date of publication of the notification under subsection 1 of section 3A object to the use of the land for the purpose mentioned in subsection and thereafter look, this is hearing the objections. मेरे केस में ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन रूल आउट हो गया और मेरे नाम पे वार्ड होना. मतलब उसके बाद आया 3D. नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन भी मेरे नाम पे हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन. देन मतलब काइंडली कम टू 3G डिक्लेरेशन के बाद का स्टेज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल एज कॉम्पनसेशन वेयर एनी लैंड इज एक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट देयर शैल बी पेड एन अमाउंट विच शैल बी डिटरमिन्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. And then मतलब it says subsection 5 of 3G, if the amount determined by the competent authority under subsection 1 or subsection 2 is not acceptable to either of the parties, the amount shall on an application by either of the parties be determined by arbitrator to be appointed by the central government. If I am not accepting that, if dispute about computation, if there can be two kinds of dispute. One is 1000 rupees डिटरमाइन हो गया, क्वांटम में हम लोग को कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन दोनों में से किसको मिलेगा इस पे डिस्प्यूट. दैट इज आल्सो अ डिस्प्यूट. 3H में आएगा जो उस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है. दिखाइए ना हम दिखा दे. 3H पहले देखिए ना, जजमेंट हम आगे में है. आर्बिट्रेशन कब होगा हम दिखा दिए. अब 3H देखिए. 3H डिपॉजिट एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट. The amount determined under section 3G shall be deposited by the central government in such manner as may be laid down by rules made in this behalf by that government with the competent authority before taking possession of the land. मतलब उसके 4 आई है जो आप कुछ नहीं वो 4 में. If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the decision of principal civil court of original jurisdiction. यहाँ पे सिविल जज नहीं है, यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल सिविल कोर्ट. तो मतलब So this is a reference under section 3H4. 3H. Right. So now the title of the respective parties is to be decided मतलब with respect to the suit property. मतलब हम एक चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि 3G के स्टेज में रादर 3H1 के स्टेज तक अवार्ड मेरे नाम पे बना. देयर कैन नॉट बी अ सेकेंड अवार्ड. हुआ ये कि अवार्ड मेरा बन गया. एक बहस मेरा है जो हम करेंगे मतलब कि जब 3G में अवार्ड मेरे नाम पे बना, मेरा जमीन था, ऑब्जेक्शंस रूल आउट करके, तो कैन एन ऑब्जेक्शन बी इंटरटेन ऑफ एन एंटीरियर डेट एट दिस ये स्टेज. तो बात की बात है ना कि अल्टीमेटली मेरिट में क्या होगा. यस वो तो हम लोग मेरिट में देखेंगे. यस यस But the point is जी that a quantum was fixed to be awarded to you. Now the learned court has reversed that quantum and has directed to be paid to the private party. Right. Correct? राइट. Now you are agreed by that judgment. It's a regular first appeal. मतलब Right. इट इज Pay the copies. एन अपील 96 में और ये पेबल नहीं होगा हमको तब एक दिन दे दीजिए, हम सेटिस्फाई कर देंगे आप आपको. कौन सा एक दिन तो सुन ही रहे हैं. नहीं इसमें तो 3 लाख रुपया ज्यादा हो जाता है.
एड वलोरम लगेगा नहीं, बोले तो हम एग्जामिन करके बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज बोले 1000 का कोर्ट फीस लगेगा कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से, और फीस लगेगा हजूर जो सिविल बोल रही है सूट ना के हिसाब से, क्योंकि ये जब डिग्री बनता है डिग्री के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगा, इसमें नहीं चलेगा। अगर देखेंगे कोई जजमेंट लेके आइए तो मानेंगे, नहीं तो हम तो अपने हिसाब नहीं से नहीं, हम ऑर्डर तो शेड्यूल 2 पढ़ेंगे ना, शेड्यूल हम तो पढ़ेंगे। कोर्ट फीस एक्ट कोटला ही कोर्ट फीस एक्ट में। हजूर हम जजमेंट भी खोज देंगे ना, नहीं, खोजिए जजमेंट, हम कहाँ, हम तो जजमेंट के लिए एकदम सेक्शन 96 में हमारा अपील है, अब हुजूर 1000 हम दे दिए, और हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो शेड्यूल है वो हम दिए। हो गया, पब्लिक देख लिया, नहीं, यूट्यूब पे भी देख लिया, ऐसा नहीं, अब कितना नहीं, दिखाना है, नहीं ऐसा नहीं, तो फिर कैसा है? हजूर नहीं हम तो आप लोग डिफेक्टिव केस में बहस करने आइएगा यार हम कहाँ कोर्ट बात किए, में। हम तो बोले कोर्ट फीस लगेगा, अब दीजिए 1000 लगेगा, हम दे दिए। 1000 कैसे लगे? देखिए 1000 आप कैसे और कैलकुलेट करते टू सेट असाइड एन अवार्ड जो होगा वो यही नहीं, सिविल कोर्ट में देवे नहीं किया है, हो? गलती किया है ना, वहाँ नहीं दिया है तो यहाँ थोड़ी हम लोग बोल देंगे मत हम दीजिए। इसलिए तो इनको हम दे देते हैं, 3 लाख वाले तो यही जाने। हजूर हमको तो खाली हमारे रहने से 3 लाख लग जाए, थोड़ा दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग बोलेगा कि भाई ये सीनियर से बहस करा लिए फिर भी 3 लाख लग गया तो क्या करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 30 लाख रुपए में सीनियर को एंगेज करिए। हाँ ये भी बात ठीक है कि यहाँ पे तो मिल ही हो जाएगा सीनियर 20, 25, 30 में, वहाँ नहीं। आप भी कौन सा कम लेने वाले, जितना का कोर्ट फीस है उतना तो आप ले ही लिए होंगे। दिमाग मत मेरा खराब कर। झारखंड में ही रहते हैं और हाई कोर्ट में ही रहते हैं, उनको सब पता है। सब नहीं देता हजूर, कभी कभी देता है। ऐसा तो नहीं कि एक का फीस दूसरे से हम ले कहाँ लेते बोले, हैं। हम कहाँ बोले कि नहीं देते। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी का फीस दूसरे से ले लेते हैं। ये वाला तो अब अलग से बताएंगे अपना दोस्त लोग को, आप कैसे बताइए जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? दो चीज देखिए, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 मतलब ये अगर ये वाला किताब, वो अच्छा दूसरा किताब है, हम अपना देख रहे हैं। शेड्यूल 2 का 13 देख लीजिए, इसमें 3 और 4 दोनों सूरत में हमको एक ही हजार, जजमेंट हम ढूंढ देंगे बस। शेड्यूल 2 का क्या? आई नो लॉर्डशिप वेरी जुडिशियस, 3 लाख ज्यादा हो जाएगा। और यही प्रैक्टिस ही रहा है, आप भी तो सुनिए हो, जितना सेकेंड अपील फर्स्ट कहाँ इतना 3 लाख मांग लिया। पहले फिक्स कोर्ट फीस होता था ना 50,000, अब वो खत्म हो गया, बैज वैलोरम हो गया है। इसके सरकार थोड़ी स्मार्ट हो गई है, सब जगह तो एड वैलोरम लगता है, झारखंड में ही लगता था 50,000 मैक्सिमम कोर्ट फीस, अब 3 लाख कर दिया उसी को। उसमें भी मैक्सिमम है 3 3 वही लाख। 3 लाख। सब जगह एड वैलोरम चलता है, कितना भी लाख रुपए लग जाए। नहीं तुम तो है ही, तो बोलता ही है कि भाई स्टेट लॉ अलग अलग हो सकता है, बट सेंट्रल एक्ट में भी यही है। अगर स्टैम्प कोर्ट फीस एक्ट देखेंगे, सेंट्रल एक्ट, अगर ये भी माने कि एनएच एक्ट से रिलेटेड है ना, तो उसमें भी यही है। उसमें थोड़ा ये देखिए 10 रुपीज करके था, और उसमें आर्टिकल 17 आप अपना किताब दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम दे रहे हैं, किताब हम दे रहे हैं, और हम एक बार पूछ भी लेते हैं, मतलब जब कोर्ट फीस का मैटर है हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं, बट लॉ इज इन माय जजमेंट। रिस्पोंडेंट कौन है इसमें?
I am appealing for one of the intervener in whose favor the amount has been awarded to be deposited. आपको कैसे नहीं पार्टी बना? So You far are not as- party in the suit. No, I am not a party. But now by the order of the learned referring court, it has been ordered that the amount may be deposited in my account. एक मिनट मतलब इसमें है क्या ना कि जमीन है मेरे नाम की, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने होल्ड कर दिया कि संस्था को देगा। इस संस्था लोग का दो ठो लड़ाई चल रहा है। कलकत्ता वाले बोलते हैं कि संस्था हम है और रांची वाले बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है संस्था हम है। तो इन दोनों का आपस का लड़ाई हो रहा है। I am representing that party in whose favor the Yeah, amount how has is been. how is it possible that the person in whose favor the award has been drawn is not a party to the proceedings? है उन्हीं है The appellant was the original land user. He was the awardee. And then one objector came. The objector is presently not before. One ऑब्जेक्टर objector को ये came. लोग कह रहे हैं कि वो गलत आदमी है, वो ऑब्जेक्टर गलत है, सो कह रहे हैं। And we are saying at least Objector गलत है तो यहाँ पे intervention कैसे किया? intervention इसलिए हुआ for so far as the awarded amount is concerned that it may not go in wrong hands. We are नहीं praying. नहीं, you find a separate suit. No, we are not agreed. We are not agreed. We are only saying that ये the कह रहे order हैं is ये अवार्ड हमको दे दो, ये order हम is not जाए कि हमारे नाम से है. वाह रे वाह। It दो is ठो बंटवारा it करने is in वाले my आ गए। name. I say that let it be deposited before this honorable court till the matter is decided. It may not नहीं, go. आपका इंटरवेंशन अलाउ करने के पहले तो हमको सोचना पड़ेगा ना हुआ नहीं। After hearing my case whether as ऐसे of हम इंटरवेंशन आपका यहाँ पे कैसे अलाउ करें? And how will I decide your on status? that I will argue based How on we will decide your status? ये लोग ऐसे on सिविल basis सूट of the लड़ रहा है। documents which we have brought in Documents the यहाँ पे हम लोग एविडेंस करेंगे क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी यहाँ तो पर एग्जिबिट करना होता है ना? मेरे नाम से ही तो अवार्ड को देने का ऑर्डर हुआ वेरिफिकेशन जो अभी जो ऑर्डर चैलेंज में है तो you are not a party. नो हम पार्टी नहीं है नहीं, ये हो गया ना appellant was the monk of my society appellant was the monk of the society दी ब्लड सोसाइटी पार्टी, इनका कहना है कि हम है ओरिजिनल वाला, वो अब आप नहीं लोग है। दोनों का जो लड़ रहे हैं पहले से। ओरिजिनल और दूसरा का जो लड़ाई चल रहा है आप लोग लड़ते रहिए। वो यही तो लोग आप लड़िए। डिसाइड कराइए पहले सिविल सूट में कि वो दोनों जो में से वो ऑलरेडी असली कौन है? वो ऑलरेडी लोगों सब को चीजें नहीं मिलना है। दो फैक्ट्स जमीन मेरा है और ये मेलोडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चले गए। वो कहते हैं कि चूंकि सन्यासी हो गए हैं हम, इसलिए इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, दुनिया छोड़ चुके हैं, यही जजमेंट लिखे हैं। आई लोग दोनों लेने आ गए। we are mainly concerned आनंद मार्गी we are mainly concerned that the amount does not go in wrong hand. We are not saying that सरकार को दे देते हैं। बताइए। नहीं we are therefore saying till this हाँ, matter वो is भी हम मान decided ले। जब तक यह डिसाइड होता वो भी मान लेंगे। ये लोग को तो कभी नहीं माने। जब अगर अपीलेंट के स्टेटस यहाँ डिसाइड हो जाता है then we cannot say anything but if it is not decided then till then the amount may be deposited before the registry of this honorable court so that it may not go in wrong hands. That is our main concern. ऐसा आप सबमिशन कर सकते हैं, ऐसा हम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। That is our there is one of our contention in our intervention that is subject to consideration of this honorable court. सही जगह जाने का एडवाइस दीजिए जो कुछ डिसाइड भी हो जाए। यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम अभी डिसाइड तो कर हम लोग देंगे? को ग्रीवांस नहीं है हम लोग तो सिर्फ वहाँ जो अवार्ड हुआ था अभी रेफरेंस में बोले कि नहीं द अवार्डी इज नॉट एंटाइटल्ड द अवार्ड इज फ्रॉम वेयर द अवार्डी इज एफिलिएटेड दैट इंस्टीट्यूशन इज हमको एंटाइटल्ड दोनों का मतलब अच्छा है, इतना ही हम हेल्प लेंगे आप लोग का लड़ाई का कि हमारा क्लेम सुन लिया जाएगा। आप लोग दोनों के दोनों जो है क्लेमेंटी कहाँ से हो गए भाई? एक चिट नहीं है, हाइपोथेसिस मतलब बिल्कुल हाइपोथेसिस है। जज साहब का लिख दिए हैं कि नहीं चूंकि सन्यासी हो गए, ये इनके माता पिता को छोड़ दिए, इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, इसलिए ये जमीन है संस्था को, ये कहती है। इसमें ऐसे देखिए ये तो रेवेन्यू किसका है? स्टेट का है। नहीं तो मेरा जमीन तो चला गया। नहीं कोर्ट फीस रेवेन्यू किसका है? स्टेट का है। स्टेट को पार्टी बनाएंगे क्योंकि ये एक थोड़ी है, स्टेट इसमें पार्टी है। डीएलओ पार्टी है, स्टेट पार्टी है डीसी भी पार्टी। आपको क्या बोलना है? इसमें कोर्ट फीस नहीं देना है? बताइए, आप कंसीड करिए, हम ऑर्डर कर देंगे कंसेशन पर। फाइनल काउंटर एफिडेविट भी कोर्ट फीस देना है कि नहीं देना है, आपका रेवेन्यू है, आप डिसाइड करिए। और बिना सेक्रेटरी रेवेन्यू के मत काउंटर एफिडेविट फाइल कर दीजिए, आप बता देना।
पता चले सर्कल ऑफिसर यहाँ पे कंसेंट का एक अजूर एक चीज बोल नहीं चलेगा। एक हम छोटा सा रिक्वेस्ट करें, मतलब चूंकि हमारा तो ये लोग लड़ भिड़ करके पैसा देने बोल ही दिया है, तो बोले हम भी इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, अगर 3 लाख दे सकता है तो दे देगा, नहीं तो देखिए- इंजंक्शन मांगेंगे कि कोटे में रख लीजिए पैसा, इनको मिल जाएगा तो इरेपरेबल लॉस हो जाएगा। हाँ तो आप मांगेंगे तब ना, आप इंस्ट्रक्शन लीजिए, देना है तो दीजिए, आप तो सुनने के लिए बैठा है, तो सुबह 10:30 बजे हजूर हम बोल देंगे, सेकंड हम अपना जो फीस के रिकॉर्ड बुला देंगे मंगाइए। तो भी नहीं आएगा। रिकॉर्ड मंगाइए, बहस करिए, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, इंटरवीनर को तो हम मैं सुनते कोर्ट ही फीस नहीं हम दे देंगे, पूछ लेते हैं तभी देते दे दीजिए। हैं। इसको नेक्स्ट वीक में रख दिया जाए, उस दिन हम पूछ लेते हैं, क्योंकि 3 लाख बड़ा है अमाउंट, अंडरटेकिंग कैसे देते हैं। हम किताब अपना वाला छोड़ दे रहे हैं। नहीं कोई काम ही नहीं है, पहले आप इंस्ट्रक्शन ही लीजिए ना, क्योंकि अगर कोर्ट फीस का बात होगा तो स्टेट को बोलेंगे फाइल करने, जवाब रेवेन्यू सेक्रेटरी फाइल करेंगे अपना जवाब कि उनको कोर्ट फीस चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक ठीक। हम लोग को क्या है, वो कंसीड करेंगे, हम ऑर्डर कर देंगे। नहीं लॉ यही है, कंसीड काहे करें, हाँ तो बस वो कभी बोल सकते कंटेस्ट करेंगे तो हम लोग जजमेंट करेंगे, कंसीड करेंगे तो हम कंसेशन पे ऑर्डर कर देंगे, उसमें क्या है। मैं टेक लिबरल हाँ। केस में Filing number first appeal 5636 of 2025 at the request of the learned counsel for the appellant, holds this case on the next week. Next Wednesday को डाल दीजिए। आज Tuesday है ना? हाँ Tuesday को डाल। स्टेट ऐसे साइलेंट मत बैठा करिए कोर्ट फीस के मामले में, आपका रेवेन्यू है। तब इतना लैंड एक्विजिशन होता है नेशनल हाईवे का, आपको रेवेन्यू नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्शन काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा रेवेन्यू सेक्रेटरी को, अभी इनको इंस्ट्रक्शन लेने दीजिए। Orders item 5 CMP 775 of 2024. सही क्या हुआ? As per office code OP number 3 and 5 as matter, appellant has been directed the petitioner to for substitution of. Substitution Because के the लिए harsh weather, the it was showering, so nobody came transit. 1 week time may continue. CMP number 775 of 24. Counsel for the appellant pays for 1 week time. Post on next Wednesday. ऑर्डर्स है पूरा ही बचा होगा बहुत है। कोई अर्जेंट ऑर्डर्स है क्या? नहीं तो एक आठ एडमिट फॉर्मल एडमिशन कराइए तो कहाँ है? सीरियल नंबर Item 6 6 first appeal 146 of 2023. Partition suit for specific performance was decreed. ये हम लोग डिपेंडेंट हैं। अच्छा देखिए FA number 146 of 2023. Counsel for the appellant is present. He submits that the defendant is the appellant before this court. The suit for specific performance of contract was decreed. The appeal is in order and has been placed for admission. Admit. Issue notice to the 1, 2, 3 pro forma con. परफॉर्मा हमारी बेटी है, दोनों बेटी हैं। Notice तो जाएगा ही. ठीक। Issue notice to the आप इनकी तरफ से अपियर होंगे तो करवा बिहार देंगे, हाँ इसीलिए। इशू नोटिस टू द respondents under ordinary process so far as respondent number 1, 2 and 3 are concerned, and so far as respondent number 4 and 5 are concerned through speed post, for which requisites be filed before this court within a period of 1 week. Office to track speed post delivery. Let records be called for from the concerned court. Special messenger चाहिए.
डिक्री हुआ है, फिर एग्जीक्यूशन में आइएगा तो बहुत दिक्कत है। टाइम है। टाइम है अभी, ठीक। पोस्ट ऑन 28th of July, awaiting service to communicate कर दीजिए। ठीक है। और करिए, काट कर लेते हैं तो समय से करा दीजिए। कंटेम्प्ट करके कौन है? Who is further in the contempt matter? Opposite Item party is 7, not. contempt civil 337 of 2024 along with item E. दो कंटेम्प्ट है। रेस्पोंडेंट का हो जाता था सामने। और नेक्स्ट कौन? Orders item 1 CMP 498 of 2012. CMP is what? What is this CMP for? Restoration. CMP है 2012 का। माय लॉर्ड, ये हम लोग फाइल किए हैं अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 फॉर इंप्लीमेंट ऑफ पार्टी स्टेट ऑफ झारखंड एज ए नेसेसरी पार्टी माय लॉर्ड एंड एनटीपीएस बाय वर्च्यू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट माय लॉर्ड व्हिच हैज बीन डन इन द ईयर 2020। You are the petitioner. माय लॉर्ड, क्या फाइल की है? आइए हम 1865 of 2025। तो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन है। मेन रिस्टोरेशन में लॉर्ड वो अभी वो है, लेकिन उसके पहले एक आइए फाइल किया गया है कि ये दोनों स्टेट ऑफ झारखंड और एनटीपीसी बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्सेप्शन में लॉर्ड। अरे भाई पिटिशनर आ ही नहीं रहा है, उसको रेस्टोरेशन का चिंता ही नहीं है, आप किससे परेशान? ये डिपार्टमेंट माय लॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, हाँ तो क्या करें, डिसमिस कर देंगे और क्या करेंगे? झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इज द पिटिशनर इन सीएम। So this application has been prepared by my lord state of Jharkhand state electricity board। यस, आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो आर द पिटिशनर्स। नहीं। तो आप इम्प्लीमेंट का क्या बात कर रहे हैं? इम्प्लीट उनको पार्टी हम इम्प्लीट नहीं किए थे सीएम के स्टेट ऑफ झारखंड। उसके लिए अलग से आइए फाइल। माय लॉर्ड अलग से आइए फाइल की वो डिफेक्ट है। इस आइए में डिफेक्ट नहीं है। आइए नंबर है 1865 2025। एग्जीक्यूशन केस 2006 से चल रहा है, तो क्या चल रहा है उसमें? क्या चल रहा है उसमें? उसमें अवार्ड के अगेंस्ट में वो एग्जीक्यूशन केस है। तो क्या चल रहा है उसमें? उसमें इसी केस के चलते वो अफेक्टेड है। क्या होगा, स्टे है? फिर क्या प्रॉब्लम? लॉर्डशिप का ऑर्डर था उसमें कि एलसीआर कॉल फॉर ऑर्डर। एलसीआर कॉल फॉर होने से स्टे हो जाता है? नहीं, स्टे नहीं। फिर क्यों नहीं हो रहा है? देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, क्यों नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट? स्पेसिफिक ऑर्डर रिगार्डिंग स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन मुस्लिम but due to the pendency of the pending petition or execution could not be done।
किसको पार्टी बनाना चाहते हैं? इस आईए में आप किसको लिखे हैं पार्टी बनाने के लिए? माइलॉर्ड आईए में लिखे हैं स्टेट ऑफ झारखंड। कहाँ लिखे हैं? पैराग्राफ दिखाएं। पैरा नंबर 1 में। The interrogatory application is being filed on behalf of the petitioner for impediment of necessary parties, that is state of Jharkhand and NTPC limited. Why state of Jharkhand and NTPC will become necessary? Mailord by virtue of Annexure C. अच्छा एक बात बताइए, जब तक ये रेस्टोरेशन से रेस्टोर नहीं हो जाता, ठीक है, उसके बाद क्या चीज रेस्टोर होगा? फर्स्ट अपील रेस्टोर होगा। Mailord. जब फर्स्ट अपील रेस्टोर होगा उसमें ना पार्टी बनिएगा। ये सीएमपी में कैसे पार्टी बन जाएगी? इसलिए कि नोटिस में पार्टी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नोटिस में आया कि 2015 के बाद जो ओनर्स लाइक करेगा माइलॉर्ड वो स्टेट ऑफ झारखंड के ऊपर करेगा। तो ये रेस्टोरेशन में क्या मतलब है आपको? ये तो फर्स्ट अपील में आप आइएगा ना। अगर ये अलाउ हो गया सीएमपी तो क्या होगा? फर्स्ट अपील रेस्टोर कर जाएगा। फर्स्ट अपील रिस्टोर फर्स्ट अपील जब रेस्टोर हो जाएगा उस समय आप इम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट? तो इसी को ऑब्जर्व करके हम कुछ नहीं ऑब्जर्व करेंगे, इसको ऑब्जर्व करके। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्हाट इज दिस। जब आप ओरिजिनल पिटीशन में पार्टी नहीं है तो उसमें तो आपको इंटरवेंशन फाइल करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ पार्टी फाइल करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट अपील में पार्टी नहीं है तो सीएमपी में कैसे पार्टी बन जाएगी? Because by virtue of memorandum, your lordship, memorandum of agreement, the entire liability has been shifted upon the state of Jharkhand and NTPC. तो ये तो आप फर्स्ट अपील में ना बोलिएगा। माइलॉर्ड फर्स्ट अपील तो पहले का है, तो उस समय जो है एनटीपीसी एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, पीटीपीएस जो है वो ट्रांसफर हो गया एनटीपीसी को। ऐसे नहीं करेंगे इसको। माइलॉर्ड इसमें केवल ऑब्जर्व कर दिया जाना कि हम क्या ऑब्जर्व कर देंगे? हम नहीं तो ऐसे इस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आप ही हमको समझाइए, जब फर्स्ट अपील में आप पार्टी नहीं है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेशन में कैसे पार्टी बनिएगा? एक मेरा एनेक्सर सी को दिया जाए। एनेक्सर इसके अंदर माइलॉर्ड पेज नंबर 13 से स्टार्ट होगा। माइलॉर्ड इसी एग्रीमेंट से जो है पीटीपीएस का लायबिलिटी जो है वो शिफ्ट होता है एनटीपीसी। तो पीटीपीएस को आप सब्स्टिट्यूट ना करेंगे, आप एडिशन ऑफ पार्टी फाइल पीटीपीएस को पीटीपीएस में that matter has been represented by the Jharkhand State Electricity Board. So PTPS is a party. It's already party. Petition number 2. तो NTPC में लोग हाँ डिलीट करने का होना चाहिए। PTPS is already party. My lord, now PTPS is existed in terms of NTPS में। इसे कहाँ से आप हम मतलब हाउ? देखिए, आप एडिशन ऑफ पार्टी नहीं फाइल करेंगे ना, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन फाइल करेंगे। तो भाई पीटीपीएस की जगह अब नाउ द सक्सेसर इन इंटरेस्ट इज एनटीपीसी और व्हाटएवर एनटीपीएस, या मान लीजिए स्टेट ऑफ झारखंड, ये झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की जगह जो है स्टेट ऑफ झारखंड है, या मान लीजिए बोर्ड विद जेबीबीएनएल है, तो सब्स्टिट्यूशन ना फाइल करेंगे, एडिशन ऑफ पार्टी कैसे फाइल करेंगे? If there is a successor in interest by virtue of any document, then you will have to say no that you want to pursue the matter and they are no longer the party in this matter. और एग्जीक्यूशन चल रहा है 2006 से, उनसे समझिए, देखिए मैं आपको समझाने के लिए, इसका जरा रिकॉर्ड देख के इनको समझाइए भाई, थोड़ी इसका कुछ ऑर्डर नहीं हो सकता। समझ के आइए, ठीक से समझ के आइए। सिविल लिटिगेशन में इस तरह से पार्टी नहीं बनता, रिट पिटीशन थोड़ी है। ठीक से अच्छे से समझ लीजिए कैसे इसका पार्टी पोजीशन होगा।